पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई के कैंडिडेट्स के खिलाफ। हमारे जो अंदाजे के मुताबिक जो इस वक्त तक हमने कंपाइल किया है उसके मुताबिक 177 सीटों में से जो हमारी होनी चाहिए थी 92 सिर्फ हमें दी गई हैं और 85 सीट्स जो है वो फ्रॉडुलेंटली हमसे ली गई हैं, जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टेप्स जो हमारे पास हैं वो हम ले रहे हैं। इनमें से 46 सीट्स वो हैं जिनके बारे में हमारे पास वेरीफाइड डेटा मौजूद है कि वो ली गई हमारे साथ, जो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, और 29 सीट्स वो हैं जिनके बारे में डेटा जो है वो कंपाइल हो रहा है और इन द नेक्स्ट 24 आवर्स वो डेटा भी हमारे पास अवेलेबल होगा। ये जो डेटा हम कलेक्ट किया है इसके हमने 3 बेंचमार्क्स हैं, उनके ऊपर हमने उनको यूज करके हमने ये डेटा कैलकुलेट किया है। एक है जो कि डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन फॉर्म 45 एंड 47, जो दर्जात फॉर्म 45 में है वो फॉर्म 47 में नहीं है। ये पहला बेंचमार्क है। दूसरा बेंचमार्क जो है वो है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में वोट जो पोल हुए हैं उनमें फर्क जो है वो इतना ज्यादा है कि बाज़ दफा नेशनल असेंबली में प्रोविंशियल असेंबली से ज्यादा वोट जो है वो पोल हुए हैं। तो ये दूसरा बेंचमार्क हमारे लिए था। और तीसरा बेंचमार्क जो हमने कंसिडर किया है वो है कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड वोट्स जो है वो इन सर्टेन केसेस जो है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से भी ज्यादा है, यानी कि जो जितने नंबर ऑफ वोट्स के ऊपर कोई शख्स हारा है, जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उसके वो उससे ज्यादा है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और जो हमारी प्रोसीडिंग्स जो है उनका हम बाकायदा आगाज करते हैं और मैं समाविया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब टेक ओवर करके मामलात को आगे बढ़ाएं। समाविया। थैंक यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले हमारे तमाम ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे मीडिया पर्सनल्स, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आज पीटीआई के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम सबसे पहले एक वीडियो प्ले करेंगे जिस वीडियो में आपको ये दिखाया जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के खिलाफ जो है वो रिगिंग की गई। तो प्लीज आइए देखते हैं वीडियो नंबर 1। फरद काइंडली वीडियो प्ले कर दीजिएगा प्लीज। ये तो हम लोग इस टाइम ऑफिस में मौजूद हैं। ये सारा हमला के सामने से ढेर में आरोप साहब के ऑफिस में ये बैलेट पेपर्स जो है ओपन पड़े हैं और थैंक यू जी। मेरी प्लीज एक रिक्वेस्ट होगी तमाम लोगों से, काइंडली स्क्रीन के आगे से हट जाइए। जिस पर्पस के लिए आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है बराए मेहरबानी वो फुलफिल होने दीजिए। काइंडली स्क्रीन के पास से सब हट जाए। I would request everyone, please, स्क्रीन के पास से हट जाइए सब। आप लोगों को प्लीज ये अंदाजा होना चाहिए कि आज इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे सिर्फ आपकी कवरेज के लिए आया है। आइए उनको मौका दीजिए ताकि वो उन्हें पता चल सके कि आपके साथ रिगिंग किस अंदाज में हुई है। इसलिए स्क्रीन के सामने से सब हट जाइए प्लीज। थैंक यू। Now I would request Shandana Gulzar Sahiba कि वो आए और इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
प्लीज स्टेज की जो राइट साइड पे लोग हैं आपसे रिक्वेस्ट है साइलेंस की. राइट साइड ऑफ द स्टेज कोई नहीं चुप होगा, आज सबका इलेक्शन है. प्लीज राइट साइड ऑफ द स्टेज साइलेंस. थैंक यू. प्रेजेंटेशन प्लीज ऑन कीजिएगा. हम कर लेंगे, that's our problem. All right. Right now, I'm addressing the international media, and that's why I'm going to be talking in English. The second half of the presentation is going to be in Urdu, and Simavia will present. See the first slide. After we got 1.25 million votes in Karachi. And out of the seats, we did not win a single seat. 1.25 million votes only in the city of Karachi. Jamaat-e-Islami received 700,000 votes and not a single NA seat in Karachi. Punjab, we got 13.6 million votes and we were given 55 seats. This is a joke with the people of Pakistan. Next slide, please. Have a look. This is the situation of the National Assembly of Pakistan at 3 a.m. PTI had 154 lead. And please bear in mind that at 2 a.m. is when the counting should have stopped and the RO should have given his Form 47. The right side of stage, या चुप कर जाए या निकल जाए. Please, इनको कहीं बाहर जाए. चुप नहीं कर सकते तो सारे बाहर जाए यहाँ से. जाए यहाँ से. Please, we don't need you. Out. Next slide please. ये जरा detail देखिए. Left side ये देखिएगा. Again 3 a.m. PTI Independence 154. PMLN 47. People's Party 47. FM 4. And JUI 4. Next slide please. The countrywide robbery that took place via Form 47 in violation of Article 92 of the Election Act. Just have a look at all the provinces. From Khyber Pakhtunkhwa, we were winning 42 seats, and the ECB stole ours and gave us 37. From Islamabad, we were winning 3, and all 3 were stolen from us. In Punjab, we were winning 115, and 55 were given to us. These are presents, by the way. In Balochistan, these previous slide, in Balochistan, we were getting 4 and we only got 1. Next slide, please. Just look at the sheer scale of the rigging. I'm just going to go through a few constituencies, so please bear with me. These are worth your time. This is the kind of naked fascism that took place on the 8th of February. It was not PTI's mandate that was stolen. It was the people's mandate that was stolen. They take our money, they take our Ehsaas ka, they take our Kisan ka, they take everything that belongs to the people of Pakistan and then they steal their votes. This is what they've done to Pakistan in one day. Please go back to the previous slide. Thank you. If you look at NA 241, we were winning as per Form 45 with 78,000 votes. And guess what they do to us in the end? We lost. Next slide, please. In NA 57, we were winning with 100,000 votes. This is till 3 a.m. in the morning. And in the morning, when the time has run out for anybody to tabulate Form 47, they gave us 44,000 that PMLN wins. In the next constituency, same thing. We're winning with 154,000, and in the end, they gave us 52,000. They stole 100,000 votes. All the details are here in front of you. Next slide, please. Next slide. Next slide, please. Thank you. Next. Button फंस गया? जी, I know. Please आगे जाइए. Okay. 234 देख लीजिए. On PTI, we're winning with 47,000 votes against NQM. And our vote is reduced to less than 4,000 in a flash of a second. Next slide, please. I'm going to stop here for a moment
and I'm going to ask the team to run the visuals by you. Whatever I've explained, we have it all in PDF form. Please have a look and see the kind of theft and the kind of rigging that took place. And let it be remembered, Form 45 is the authorized form given by the Election Commission of Pakistan to the presiding officer, and the presiding officer signs it in front of the polling agents. Those forms are then tabulated and created into one Form 47. Have a look at the PDF document, the draft please. Open up the draft, ladies. Please start scrolling through them. Have a look at all these NAs. That's 47, 48, 49. Attak 50. Rawalpindi 53. Taxila 54. Rawalpindi 55. Rawalpindi 56. Rawalpindi 57. Chakwal 58. Jhelum 60 sorry. Gujarat 64. Sialkot NA 71. Toba Tek Singh NA 106. Lahore National Assembly 126. Lahore National Assembly 128. Pakpatan National Assembly 139. Multan National Assembly 148. आगे जाते जाइए जी. This is just an example of the horrific sheer scale of rigging and voter manipulation that took place once the votes had been cast. There are dozens of examples of our polling agents being thrown out of polling stations. They were not signing the documents in front of our polling agents. There are multiple videos which you will see right now at the kind of violence that took place when our polling agents tried to secure the Form 45. All this data is available to you. We have already distributed some documents to the international media and the local media. After this, when Mavia is done with the Urdu part of the presentation, we shall also be sharing with all of you 2 links. Those links give you copied PDF copies of Form 45s of all the people whose mandate was stolen. In addition, we have given you a breakdown of each and every polling station and the votes that were cast polling stations. So we've done our homework, and I can assure you our lawyers are going to have a field day with this. Thank you so much. Thank you so much, Shanana. Thank you, जी. So, पाकिस्तान में इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख रही है कि कभी भी पाकिस्तान में जो है वो धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं हुआ. लेकिन इस बार तो एक हद जो थी उसको भी क्रॉस कर दिया गया. धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ, और उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल्स जो हैं आपको नजर आएंगी. इस वक्त अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें तो नवाज शरीफ साहब आपको नजर आ रहे होंगे रोते हुए दुखी अंदाज में, और जिसमें हमारी यास्मीन आपा लीड कर रही थी LA 130 पर रात तक. मगर जैसे ही सुबह हुई तो एकदम से उनके रिजल्ट को चेंज कर दिया गया. Slide number 2, please. Rehana Appa, the great, mashallah, our Iron Lady. We are proud of her, mashallah, mashallah. The way she contested the election, that was amazing. इनके मद्दे मुकाबले थे ख्वाजा आसिफ साहब, जिनको हमेशा से सिवाय क्रिटिसाइज करने के और कुछ नहीं आता, या जुल्म करने के अलावा कुछ नहीं आता. रेहाना साहिबा रात तक विन कर रही थी माशाल्लाह. मुझे आई एम सॉरी आई कैन सी दिस स्लाइड प्रॉपरली. कैन आई हैव ये ऑन? ओके, आप लोग ये देखिए कि जो रेहाना आपा की लीड थी वो जो है सुबह ख्वाजा आसिफ साहब को दे दी जाती है. तो ये इसे कहते हैं रिगिंग, और वो भी रात के अंधेरे में डाका डाला गया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे NA 47 के कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं, शुएब शाहीन साहब. इन पे तो डाके का कुछ ज्यादा ही जो है वो उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का डाका इनके हक पे मारा. और आप देखिए कि तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने जितने वोट लिए हैं वो सब वो हैं कि जो शुएब शाहीन साहब के वोट्स थे, लेकिन सुबह उसको भी चेंज कर दिया गया. ये होती है रिगिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
ओके जी, अब आते हैं रावलपिंडी की तरफ। हमारे शेर ने, हमारे चीते ने यहाँ से NH56 से इलेक्शन लड़ा, शहरयार रियाज साहब ने, जिन्होंने माशाल्लाह एक भरपूर किस्म की लीड ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हनीफ अब्बासी साहब के जो शुरू से चोरी में काफी माहिर हैं, तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि सुबह शहरयार भाई हार चुके थे 3 बजे के बाद। 3 बजे तक शहरयार भाई बिल्कुल जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब जो है वो सबकत ले गए उनसे। थैंक यू शहरयार भाई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। NA236 कराची, आलमगीर खान वर्सेस हसन। आप इसमें देखिए कि किस तरह से, जैसे शानदाना आपा ने भी आपको बताया कि कराची पे जो है बहुत ज्यादा जुल्म किया गया है, कि हमने सारी सीट्स वहां से विन की थी, लेकिन एक भी सीट हमारे हिस्से में नहीं दी गई। तो आलमगीर के साथ भी वही हुआ कि हसन साबर जो है वो जीत गए। और इसमें एक मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। भाई एक्सक्यूज मी, आई कांट सी द स्क्रीन, थैंक यू। ओके जी, मोहम्मद हारिस मेयो वर्सेस जावेद हनीफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रात तक हमारे PTI के कैंडिडेट जीत रहे थे, लेकिन सुबह किसी और ने सबकत ले ली। नेक्स्ट, दी ग्रेट अयाज अमीर साहब। कौन नहीं जानता इनको कि इन्होंने कितना जबरदस्त इलेक्शन लड़ा है माशाल्लाह। बट अनफॉर्चुनेटली ताहिर इकबाल साहब, उनको रात को वो तमाम वोट्स दे दिए गए कि जो अयाज अमीर साहब ने हासिल किए थे। तो ये रिगिंग है। इन तमाम चीजों से सिर्फ आप ये अंदाजा लगाइए कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को कॉर्नर करने के लिए, किस तरह इमरान खान के सिपाहियों को कॉर्नर करने के लिए उनके खिलाफ जो है वो महाज़े जंग जो इन्होंने 1.5 साल से जो है बर्पा कर रखा था, उसको इस इलेक्शन में, कि जिसका इमरान खान साहब को बहुत अरसे से इंतजार था, कैसे इन्होंने तबाह बर्बाद किया और किस तरह से इन्होंने खुलेआम धांधला किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। NA164 मलिक एजाज वर्सेस रियाज पीरजादा, जो कि रात तक 18,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह होते ही उनकी लीड जो है वो दूसरे को दे दी गई। नेक्स्ट, NA243 शुजात अली वर्सेस अब्दुल कादिर पटेल, जो कि रात तक 4,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह उनकी लीड को चेंज कर दिया गया और वो हार गए। वैसे सब लोग नोट कीजिएगा, जो ऊपर इससे पहले आसिफ जरदारी साहब की एक शातिर किस्म की जो है स्माइल आपको नजर आ रही थी, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि कराची को किस खूबसूरत अंदाज से जो है वो कराची को तबाह किया गया इन लोगों की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी हमारे NA11 सैयद फरील वर्सेस अमीर मुकाम। अमीर मुकाम को तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कितने ईमानदार हैं वो, ये तो आपको अंदाजा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जी PK72 महमूद जान वर्सेस कामरान। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी का कोई वोट है ही नहीं वहां पर, ठीक है, और वो देखिए कि वो उनको दे दिया गया माशाल्लाह। ये हमारे मुल्क का और हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारे जो वहां पे ROs थे उनका कमाल है ये। जेके पावर बैंक है। ओके जी, फिर हमारे पास NA40 में मलिक औरंगजेब खान, जो कि 38,000 से जीत रहे थे, उनको जो है वो तीसरी पोजीशन दी गई। जब धांधली हुई तो उसके बाद उनको तीसरी पोजीशन दी गई, जिसमें मौलाना को जितवा दिया गया, जिनके सिर्फ 18,000 वोट थे। नेक्स्ट ही आ जाते हैं हम, आप लोग ये पिक्टोरियल्स देख सकते हैं, ये वो एविडेंसेस हैं कि जो रात तक आपकी तमाम मीडिया स्क्रीन्स पर जो है शो हो रहे थे। आप लोग देखते जाइए प्लीज, इनको साथ साथ आप जो है नेक्स्ट उस पे जाते जाएं कि किस तरह से जो है धांधली की गई है। और यहाँ पे वो पूरा टोला बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है कि जिसने इस मुल्क को इस टाइम इतना बड़ा नुकसान दिया है कि चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो आपकी मॉरल वैल्यूज हो, हर चीज को तबाह बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो लिंक आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये आपके साथ हम शेयर भी करेंगे। काइंडली आप लोग जो जितने हमारे कंटेस्टेंट्स हैं
जितनों ने इलेक्शन जीता है और उन्हें हरा दिया गया, उन सब के फॉर्म 45 जो हैं वो इन लिंक्स में मौजूद हैं। आप लोग इन लिंक्स को ओपन करके आप बिल्कुल उनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ये लिंक हम आपको इसके बाद प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू गर्ल्स। अच्छा जी, अब हम चाहेंगे कि वीडियो नंबर 2 जिसमें आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस वक्त रिगिंग की गई तो उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े एहतजाज किए आरओ ऑफिस के सामने, इसके अलावा अपने विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हम चाहेंगे कि वो वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पब्लिक जो है वो अपना मैंडेट वापस क्यों लेना चाहती है और इस वक्त कितने इश्तियाल में है पब्लिक के हमें हमारा चोरी हुआ मैंडेट जो है वो वापस दिया जाए। प्लीज प्ले कीजिएगा वीडियो। थैंक यू। ओके, सो दिस इज रावलपिंडी। NA 57 एंड 56 ने ये प्रोटेस्ट किया था। कराची, जहां पर हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों को गोलियां मारी गई। सवाल आई नो दैट पोस्ट के बाद है, मैं वही बता रही हूँ, डिफरेंट जगह पे है। इसमें तकरीबन हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके प्रोटेस्ट जो है वो आप देख सकते हैं। ये बर्बरियत दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूं ही शोर नहीं डाल रही, बल्कि सच में उनके साथ बहुत बड़ी जो है वो हमला किया गया है। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सलमान अकरम राजा साहब प्लीज यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं। सर इधर ही बैठे रहे, इधर ही बैठे रहे, इधर ही बैठे रहे, माइक इधर लगे हुए हैं। सलमान राजा साहब माइक लिए पड़े हुए, उनको कहीं इधर ही बैठ राजा साहब जगह नहीं है तो वो आगे ही आ जाए, उनको कॉर्नर्स दे देते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का रिक्वेस्ट है कि जब माइक्स पर आए यहाँ पे बैठ कर स्पीच करें जो भी करनी है। तो कॉर्डलेस हैं आपके लिए, कॉर्डलेस हैं आपके लिए, इधर आ जाएं। जिसको एक और कॉर्डलेस देंगी, एक और कॉर्डलेस देंगे जी, इधर ही हो गया। एक कॉर्डलेस और देंगे, कॉर्डलेस पकड़िएगा उधर से इधर। अली 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 यार ये सलमान साहब की कॉलर पे लगा दे, जहाँ कॉलर पे लगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन कॉलर पे लगा, साइड नीचे उठ जा यार लगा ना कॉलर पे, कॉलर उसके कॉलर पे लगाई, कॉलर कॉलर और कॉलर सर कॉलर पे लगा लें। कॉलर बहुत शुक्रिया। मैं उर्दू और अंग्रेजी दोनों में करूंगा क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के दोस्त भी मौजूद हैं। सो आई विल स्पीक इन बोथ उर्दू एंड इंग्लिश सो दैट everybody present here
can. थोड़ा सा आगे आ जाए राजा साहब, थोड़ा सा आगे हो जाए So the first thing to remember while you look at the data, the evidence that we have, कोई नहीं is that the rigging that happened to this election primarily happened at the offices of the returning officers. Now that is a very serious thing. Normally one talks of rigging at polling stations, where the accusation is that the rival candidates carried out the rigging. But once the votes have all been brought to the office of the returning officer, who is a state official, and once the forms, the Form 45, that tabulates the result at every polling station has been brought to the office of the returning officer, one expects that the final aggregate based on the results from each of the polling stations would be done fairly by the returning officer. Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan. Fictitious Forms 47 were created, which had nothing to do with the underlying vote that had been cast on the 8th of February. The underlying Forms 45 that were delivered at the offices of the returning officers were tampered with, were discarded, and completely fictitious results were created in at least 90 National Assembly constituencies. Now this raises a very serious and troubling question for democracy going forward. What is the point in holding an election if you're going to create a result out of thin air? Why should people come and vote at all on polling day if the result is going to have nothing to do with how they voted? So now what we are facing is a permanent question mark over democracy going forward. If the state officials responsible for safeguarding the election can be won over, can do what they did during the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan, to be conducted in Pakistan, becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud. This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leadership that were picked up in their thousands, the leadership as well as the grassroots workers. Our symbol was taken away in the hope that people would not know who to vote for. This atmosphere of fear that pervaded the election campaign, every day our workers were picked up, our banners, posters, streamers were taken down by official vehicles, municipal corporation vehicles across the country. And anybody who invited us to a corner meeting had his home broken into during the dark of night. So with this atmosphere, we went into the 8th of February, nevertheless determined to allow the people of Pakistan to speak. The people of Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them. This was a historic. I went to polling stations in dark, dingy lanes, and I went to women's polling stations that day where illiterate women were standing, queuing in lines for hours, and they had actually painted our election symbols on their sleeves, on their hands. We all had different symbols. I had a badminton racket, people underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush, and they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us, they said, we know who you are. We know who you are standing for. We know what you are standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. However, what happened was equally disgusting. We have magnificence on one side and disgusting assault on the election on the other. So during the night, in my case for instance, in A128 Lahore, throughout the day the polling stations were swarming. It was
a carnival atmosphere. And the forms 45, as they started trickling into the RO's office, I was sitting there, I'd gone there around 6:30 p.m. Be present. Every single polling station that had come in by 10 p.m., I had won. And the next morning when we got the forms 45, I had a lead of 100,000, the other candidate. 100,000. But at 10:30 p.m., I was ousted from the RO's office. There is a video of that as well, I could play that. So a contingent of policemen actually physically threw me and my wife, who was my election agent, out of the RO's office. My wife stood her ground, she sat on a chair, they physically lifted the chair and they threw us out. And thereafter they created the fake Form 47 that they announced at 1 p.m. the next day, the 9th of February. Which had nothing to do. Now what they did was, what's ridiculous, they could not really take away my vote, so they declared that I had polled 160,000 votes in Lahore in my constituency. This was a massive vote. This was a vote greater than any other in Lahore. But then they showed my opponent, who had not actually gone beyond 60,000, as having polled 172,000 votes. This took the turnout for my constituency, NA 128, to 57%, whereas the turnout for every single provincial assembly seat underneath me, under NA 128, is 39 or 39.5%. So a jump of 19% between the National Assembly turnout and the Provincial Assembly turnout tells you everything. And I would urge the international media, the observers, to look for the turnout figures for the Provincial Assembly and for the National Assembly in the various constituencies where we say assault took place. And you will see this pattern repeated everywhere. This suggests that 110,000 voters entered polling booths and did not vote for the provincial candidate, but only voted for the national candidate and only the candidate opposing me. This is absolutely ridiculous. And this shows the clumsiness with which this assault was carried out. And we are taking all this to the courts, we have taken all this to the Election Commission, and we have our forms with us. Here I have the Form 45 that we filed in the Election Commission of Pakistan on the 12th of February. Now, nobody could have recreated these forms in 3 days. We filed every single form. We've done a detailed analysis, compared the results from the Provincial Assembly seats, and I urge all candidates to do that, do the hard work. And it is indisputable that there was an assault of the most drastic nature on the election process on the 8th and the 9th of February. Now with this, I want the international media, the international observers, to take our message to the world, to say that the people of Pakistan have been denied their voice yet again. And consequence of this is most serious for the country. Kindly see, had we been allowed our fair number of seats, the PTI clearly would have emerged as the only federal party in Pakistan. We would have had at least 14 seats in Karachi. We would have had seats in Balochistan. We would have had seats everywhere. And we would therefore be the federal party that we actually are. But what they've done, by the rigging that was carried out, they've turned every party into a small regional party. So what we have now is the People's Party as just a Sindh party. We have the PMLN, which got no more than 20. It's clear that by fracturing the mandate of the PTI, we have done damage to the federal project in Pakistan. मैं उर्दू में थोड़ा सा कहूँगा, देखिए हर हल्के में आपने ये देखना है कि जो सूबाई असेंबली के वोट हैं उस हल्के में, उनमें और कौमी असेंबली के वोटों में फर्क कितना है। मेरे हल्के में 128 में 1,10,000 वोटों का फर्क है। ये वो वोट है जो मेरे मद्दे मुकाबिल को झूठ डाले गए, और ये चीज हर हल्के में हुई है। जब आप नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के वोटों को उसी हल्के में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस दिन हुआ क्या। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सारे फॉर्म 45 तो देख ही सकते हैं, ये ऑनलाइन मौजूद हैं। इन फॉर्मों को कोई शख्स 2 दिन में नहीं बना सकता था। हमने इलेक्शन कमीशन में फौरन ये फॉर्म फाइल कर दिए ताकि ये इल्जाम न लगे कि किसी ने ये बाद में बनाए। लेकिन सारी दुनिया को बताइए कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सलमान भाई। नाउ नेक्स्ट यहाँ हम अपनी मेरी रिक्वेस्ट है, बहन अलीमा आपा को खुशामदीद कहते हैं
और मैं कहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी इस बहन के लिए जिसने अपने भाई की मजबूती में जंग लड़ी है। उसी बहन को सलाम पेश करता हूँ। Alima Abba, thank you so much, and Uzma Abba, thank you so much for coming here and joining us. We are grateful और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब जो है वो हमारे दरमियान होंगे और इंशाअल्लाह एक बार फिर कहेंगे मेरे पाकिस्तानियों, इंशाअल्लाह अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से। एक गुजारिश है, काइंडली इंतहाई शोर सुनाई दे रहा है, प्लीज मेंटेन साइलेंस ताकि हम एक दूसरे को सुन सकें। जितने लोग नीचे से बोल रहे हैं काइंडली खामोश हो जाए, जरा स्पीकर्स को आप सुने। और ये मैं गाइस पे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट स्पीकर कॉल होगा, जल्दी की शक्ल न दें, इसको प्रेजेंटेशन तक महदूद रखें। शुक्रिया। बोलेगा उसे बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल मीडिया तक जाना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से कि प्लीज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुतालिक आप प्लीज आगाह कीजिए इंटरनेशनल मीडिया को भी और नेशनल मीडिया को भी। थैंक यू सर। एंड प्लीज ये तमाम लोग जो राइट साइड पे काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, मीडिया डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। प्लीज, दिस इज फॉर यू ऑन गुड, काइंडली थोड़ा सा पीछे हो जाइए प्लीज। थैंक यू जी। अयाज साहब प्लीज। What were the mechanics of trading in Hyderabad constituency in M58? N58 is to the south of Islamabad. The one thing done early in the यार वैसे ही लगा ले, year जो आवाज आएगी याद आएगी। RO के दफ्तर को सील कर दिया गया. The RO's office is in the district complex. It was sealed by police बाहर ही न निकाल दें यार। and by क्या कहूँ, निगरानों के निगरान वो मौजूद थे और उन्होंने वो सारा बंद कर दिया। I had gone to the RO's office at 6 o'clock. निकल जाने दे इसको। They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock. आ जाओ आगे हो जाओ। Which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. Many tha, none of my election agents, no one else. I have all the form, the original Form 45s. मेरे हल्के में 456 polling stations. The Forms 45 of all these polling stations are present here. I got 1,55,000 votes. आगे बैठ दे थोड़ा सा, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं, बस इधर ही। The Muslim League candidate also got a large number of votes. According to Forms 45, his vote tally was 1,29,000, which is a fairly decent number. But in the declared results, the winner was given 1,15,000 votes. मतलब है उसके actual vote जो थे उससे भी कम उसको दिया. The People's Party was given 74,000 votes out of nowhere. Their actual vote count, the PPP candidates' vote count was 11,000-12,000. The Labbaik got 25,000 votes and he was gifted with an additional 25,000 votes, which means 45,000 votes. Now what happened was, and I'll be very brief, I won't take much of your time, when the announcements were stopped on television, as I told you, the compound, the district compound had been sealed off. The presiding officers of the constituency were standing in the courtyard. And they kept standing in the cold until morning.
उनसे रिजल्ट लिया ही नहीं गया। उनके हाथों में रिजल्ट्स थे, उनके पास बैग्स थे। किसी ने इतना तकल्लुफ नहीं किया कि बैग्स ले लें, उनसे रिजल्ट्स ले लें। And at 6 o'clock in the morning, while the presiding officers were standing outside in the cold with the results in their hands, the result was declared. I mean, can there be a bigger farce than this? I'll just conclude with this. Thank you. शोर न करें प्लीज। एक रिक्वेस्ट है तमाम स्पीकर से, इस प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद ये है, वी वांट to bring before the international media the candidates who are the victims of this fraud. So kindly make your speeches precise, be it succinct, so that they have some time. We have around 200 candidates who have got affected. Each of them will have at least 1 minute. So make it a precise statement. Thank you. Thank you, Shirafzal bhai. Thank you so much, Ayaz Mir sahab, and we wish you all the best. Okay जी, अब हम दरखास्त करेंगे अपनी आयरन लेडी रेहाना डार साहिबा से कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई नारेबाजी नहीं होगी। प्लीज। और अभी कोई खामोशी से हमारी माँ को सुनेंगे, ये हमारी कौम की माँ है, ये हमारी मादरे मिल्लत की जगह है, और खामोशी से सब लोग सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा सियासत में कोई तल्लक नहीं था। मैं एक घरेलू खतून, एक माँ थी, घर 4 दीवारी की इज्जत थी। मेरे घर को ख्वाजा आसिफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करी। इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पांव पर शीशे मारे, और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस हसन इकबाल ने ख्वाजा असर से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रह गई। ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ हैं और कहाँ नहीं। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी, दीन से 40 साल का मेरा रास्ता था, मैं दर्श देती थी। मैं इस जुल्म के खिलाफ डट, खौफ के बुत मैंने तोड़ दिए, और ला इलाहा का सहारा लेकर एक अकेली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली, और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो वोट था इमरान खान का था, दरिया बन गया, और माँ के साथ खड़े हो गए। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का था। शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। शहर सियालकोट इमरान खान का है। मेरा तो दीन का रास्ता था। मैं जुल्म के खिलाफ डट गई। मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए। इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन न की जाए। वही उनकी थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। वही महाफज के मारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अलीम दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तलक नहीं था तो मेरे पर जुल्म किया। मैं इसके खिलाफ डट गई, और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी रहा इलेक्शन का, मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वालों से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे ख्वाजा आसिफ सर्वे के बाद, वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही है। ये माँ जी के सारे फॉर्म 350, ये माँ जी के 350 रिजेक्ट। ये रेहाना डार साहबा के जो 50,000 से ऊपर लीड से जीती है हमारी माँ जी के, वो फॉर्म 45 है। चैलेंज करते हैं
ख्वाजा आजम को मैं इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दिया। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के कॉल्स आ रही थी बाहर से भी, सियालकोट से। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा दिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया है और बस से उठा कर ले गई। मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर कारों के दफ्तर गई। साथ मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ। आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे। बड़ा तशद्दुद किया हम पर। और देखो ये मेरा अंगूठा, रोड के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सर पर अंदर गई। मैं पूछती थी कि क्या मेरा राइटी में जिले का इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे इजाजत है मैं अंदर जाऊँ। मगर उस वक्त ख्वाजा असफ साहब के वो हसन इकबाल डीपीओ और आर इकबाल मिलकर बाली रकम लेकर मेरे रिजल्ट को तब्दील कर रही थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियालकोट को बुलाया और अपने 345 असर रख के ऊपर मैंने वही किताब जो हमारे नबी पर उतारी गई थी ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म में मैं उस किताब की कसम रख के कहती कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ख्वाजा सभी लाए अपने 45 फॉर्म। और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो। अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा, माँ नहीं गिराने वाला खुदा होगा। माँ की बद्दुआ। इतना जुल्म ना करो, हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे, मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल कारो इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असल इकबाल कारो ने भी और उसका नाम है असल इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ। मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने डस्का में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो डस्का की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली है। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दे जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहे तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं इल्तिमास करता हूँ, ये जलसा नहीं है। मेहरबानी करें, तमाम स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपने साथ हुए फ्रॉड का जिक्र करें। बाकी खान का पीटीआई का जो बयानिया है वो ऑलरेडी। दूसरी बात ये है कि स्टेज से वो हजरात उतर जाए जो इफेक्टेड एमएनएज और एमपीएस नहीं है। मेरी इस्तदा है कि सिर्फ मुतासिरा एमएनएज और एमपीएस फ्रंट पे जो साहिबान जिन्होंने अपना ज़ाहिर राय कर दिया है उनसे इल्तिमास है कि सीट वेकेट कर दें ताकि नए मुकर्रीन हजरात वहाँ पे तशरीफ रखें और अपना बयान जो है वो आप सबके सामने पेश करें। इस्तदा है एक दफा फिर कि ये यहाँ पे तकरीर न करें, सिर्फ अपने साथ हुए फ्रॉड का जिक्र करें, फॉर्म 45 रखें, डिफरेंस बताएं कितने मार्जिन से जेली तौर पे आपको अरवाया गया है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अभी हम
काइंडली जो बात कर चुके हैं अगर वो सीट वेकेट कर दें तो हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी बात करना चाहते हैं वो ताकि मीडिया से बात कर सके, और प्लीज बात को शॉर्ट रखिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चांस अपने लोगों को दे सकें। थैंक यू। अब हम थैंक यू सो मच जी। अब हम नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट खुरम शेर जमान और रगिस्तान साहब फ्रॉम कराची कि वो अपनी बात करें प्लीज, लेकिन सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा नहीं खाएंगे। इस्लामाबाद का हम कर रहे हैं, इसके बाद सबको चांस देंगे, अभी चांस देंगे, सबको मिल रहा है। खुरम शेर जमान और रगिस्तान। जी मैं आज से कुछ दिन पहले भी बात कह रहा था और आज मैं वापस गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हैं बाहर से हों या पाकिस्तान से हों, मैं आप सबसे गिला करूंगा। वो मेरा गिला ये है कि जो कुछ कराची के अंदर हुआ, जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो डे लाइट रॉबरी कराची की हुई, उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल ही गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची है। जिस तरीके से एमकेएम को शहर कराची के अंदर ये तोहफे की शक्ल में सीटें बांटी गई, आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, बांटी गई, उसके ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आवाज उठाई नहीं गई। क्योंकि आप ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने जब 2018 में भी अपनी हुकूमत बनाई थी तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो शहर कराची ने किया था। और हमने ये देखा कि जब 2024 में इलेक्शन हुए, जितना वोट तहरीक इंसाफ को शहर कराची में इस दफा मिला वो शायद 2018 में नहीं मिला होगा। जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, उन फॉर्म 45 में ये देखा कि 12.5 लाख से लेकर 13 लाख वोट जो है वो कराची के अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिए। मैं ज्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, मैं आपको खाली 3 एग्जाम्पल्स दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर जो है वो अपनी 19 सीटें जीती हैं। 19 सीटें, 19 नेशनल असेंबली की सीट हमने कराची में से जीती हैं। उसके साथ साथ एक हैरान कुन बात यह है कि हम देख रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है वो रिजल्ट्स कराची के अनाउंस हो ही नहीं रहे। और मुराद अली शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सईद गनी का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजाल है कि कराची की बात हो जाए। हैदराबाद के अंदर हमने इतनी बड़ी लीड ली है कि कोई हिसाब नहीं। 6 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं और 2 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। वहां पे वो सारी सीटें खाकर हैदराबाद की एक सीट दे दी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बदनामे जमाना जो सियासी जमात एमकेएम जो जिम्मेदार तबाही की पाकिस्तान की मईशत की पिछले 30 साल तक, उस सियासी जमात को वापस नाफिज कर दिया गया कराची के ऊपर। रिजल्ट हमारे पास फॉर्म 45 के अंदर यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी कराची के अंदर हमारे बाद नंबर 2 पे आई है, वो कहीं पर भी नहीं है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी 3रे नंबर पे थी, टीएलपी 4थे नंबर पे, और एमक्यूएम जिसको बांटा गया है सीटें वो 5वें नंबर पे भी, 5वें नंबर पे। ये हम फॉर्म 45 के अंदर उसको साबित करेंगे। तो मैं आपको खाली 3 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा कि NA 236 में हमारे कैंडिडेट ने 1,03,640 वोट लिए और उसको कितने वोट दे दिए? उसको 1300 वोट दे के फारिग कर दिया। 1300 NA 241 से इलेक्शन लड़ा था। NA 241 से मैं इलेक्शन लड़ा था। 78,000 वोट्स मैंने सिक्योर किए, 78,000। मेरा रिजल्ट क्योंकि आरओ नहीं उस मेरा आरओ जो था उसने रिजल्ट तब्दील करने से दिया, आधी रात को उसको हटा दिया, आधी रात को तब्दील करके किसी खातून को बुलाया, उसे डराया धमकाया और ये हाल है कराची शहर के। 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं होगा किसी स्पीकर के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हाईलाइट कराची को प्लीज 1 मिनट से ज्यादा टाइम किसी भी स्पीकर को नहीं दिया जाएगा। हमारे पास टाइम कम है, इंटरनेशनल मीडिया है, इनका टाइम बड़ा कीमती है। यहाँ पे स्पीचेस न करें, प्रिसाइजली बताएं फॉर्म 45 पे आपके कितने वोट हैं, 47 में आपको कितने वोटों से हराएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले तो मैं हमारी इंटरनेशनल मीडिया का और लोकल मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, सिंध से, कराची से हमने
प्रोविंशियल असेंबली की 34 सीटें जीती हैं, लेकिन एमकेएम और पीपल्स पार्टी ने आरओएस के साथ मिलकर रात के अंधेरे में हमारी विनिंग को जो है वो शिकस्त में बदल दिया। मैं आपको अपने PS 116 का बता रहा हूँ, ये मेरे पास फॉर्म 45 के तहत मेरे 4167 वोट थे, पीपल्स पार्टी के 3278 वोट थे, उनके फॉर्म 47 में 7000 वोट कर दिए और मेरे 2164 कर दिए। ये आरोप और उनके साथ जो माफिया था, उन्होंने ये जुल्म, ये जबर पूरे सिंध में प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के साथ किया है। तो आप मीडिया के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इन बातों को आप हाईलाइट करें, ताकि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया है, कोई असेंबली में आए, ये चोर, ये डाकू, जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क का खून चूसा है, इनको आगे ना आने दें। शुक्रिया। तमाम स्पीकर अपना तारुफ कराएं। ये अरबिस्तान थे, हमारे साबिक MP भी हैं और अभी प्रोविंशियल असेंबली में अब सैफुल्लाह साहब बात करेंगे। नेशनल असेंबली के हमारे उम्मीदवार हैं कराची शहर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैफुर खान और मैं कराची NA 235 से इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं अल्लाह